1949, the Constitutional Assembly of India formally adopted the Constitution, which came into effect on 26 January 1950. The Indian Constitution is not just a document, it is the foundation of our democracy, drafted under the visionary leadership of Dr. Ambedkar. It embodies the dream and aspiration of the people of India. It lays down the fundamental principles, rights, and duties that guide our nation and ensure justice, liberty, equality, and fraternity for all citizens. The Constitution is remarkable for its inclusivity and adaptability. It units a diverse nation like ours while giving every individual the freedom to practice their culture, religion, and language. It is the backbone of our democratic values, ensuring that every citizen, regardless of their background, has an equal say in the governance of the country. On this day, let us take a moment to honor the visionaries who worked tirelessly to draft the incredible document. At the same time, let us reflect our responsibilities as citizens to uphold the values of our Constitution, following the fundamental duties, respecting others' rights, and contributing to the nation's progress are ways we can show our gratitude. As we commemorate this day, let us pledge to protect the integrity of our Constitution and strengthen our democracy. Together, let us work towards building a nation where justice prevails, freedom thrives, and equality is a reality for all. आज हम सब यहाँ संविधान दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा को अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था। यह दिन हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों के अथक प्रयासों का समर्पित है। भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और अद्वितीय संविधानों में से एक है। यह हमारे देश की विविधता, एकता और समृद्ध समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना की गई है, जो हमें एक शक्त और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में मार्गदर्शन करती है। संविधान न केवल हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। हमें संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों का सुरक्षित रखें और उन्हें आगे बढ़ाएं। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि संविधान दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की नींव को याद करने और उसे सम्मान देने का दिन है। आइए संविधान के प्रति सभी सम्मान और संपूर्ण को प्रकट करें। सब Now let's talk about the fundamental rights of Indian Constitution. The Indian Constitution guarantees 6 fundamental rights to its citizens. First, right to equality. Articles 14 to 18 of the Constitution guarantees equality before the law and prohibits discrimination based on religion, race, caste, sex, or place of birth. Second, right to freedom. Articles 19 to 22 of the Constitution guarantees freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, and the right to practice any profession or occupation. Third, right against exploitation. Articles 23 to 24 of the Constitution prohibits all forms of forced labor, child labor, and trafficking human beings. Fourth, right to freedom of religion. Articles 25 to 28 of the Constitution guarantees freedom of conscience and the free profession, practice, and propagation of religion. Fifth, cultural and educational rights. Articles 29 to 30 of the Constitution guarantees the right of any section of citizens to conserve their culture, language, or script, and the right of minorities to establish and administer education institutions of their choice. Sixth, right to constitutional remedies. Article 32 of the Constitution guarantees the right to move to the Supreme Court to enforce the fundamental rights. The Constitution also includes Article 13, which gives the judiciary the power to safeguard, defend, and interpret fundamental rights. The courts can invalidate any law that contradicts which right of the Constitution guarantees the right to move to the Supreme Court to ensure the fundamental rights. Option A, cultural and educational rights. Option B, right to constitutional remedies. Option C, right to equality. Option D, right to freedom. Yes, the answer is right. Option B, right to constitutional remedies. Question 2. Who is the father of Constitution? Option A, Mahatma Gandhi. Option B, Pandit Jawaharlal Nehru. Option C, Dr. B.R. Ambedkar. Option D, Indira Gandhi. Your answer is correct. Option C, Dr. B.R. Ambedkar. On which day the Constituent Assembly of India formally adopted the Constitution? 26 January 1950, 23rd July 1948, 2 October 1947, 26 November 1947. No, your answer is wrong. 26 November 1947. On which day the Indian Constitution came into effect? 2 October 1947, 15 August 1950, 26 January 1950, 23 January 1947. The answer is
26 जनवरी 1950। भारत का संविधान किस वर्ष अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। आपका उत्तर सही है, 1949। संविधान दिवस के मौके पर हमें किन मूल्यों का अपनाने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए? असमानता और भेदभाव, समत्व, स्थानीय मूल्यों का पालन, कानून तोड़ना, केवल अपने लाभ की सोचना।